हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हो? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। We can start माता जी। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। So मीनाक्षी माता जी, Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. we can start. Yes, we can start. Yes, Yes, Prabhuji. Or we need to wait, or we can start. we can start. Sure, Mangala Prabhuji. Charan. Okay, yeah, sure, Prabhuji. Where's my PPT? Just a moment, Prabhuji. So before starting, I just pay obeisances on the lotus feet of Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishnaaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshitare. So today I try to just glorify a few pastimes of Six Goswami, although it's very difficult
to glorify in a half an hour the glorifications of 6 Goswami, but I'm trying my level best. I just pray on the lotus feet that I can just glorify. इतनी मतलब जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो आई थॉट कि इतना कुछ है कि शायद अगर हम एक गोस्वामी को 2-3 घंटे भी अगर we will discuss, then it's very difficult to glorify them. For that time is also less. So it's whatever I just prepare is just like just a drop from the ocean. So before starting a glorification of Goswamis, I just like to pray at the lotus feet. I can glorify them in the right way and right manner and right mood and right consciousness. So you can also read this. I just sharing on the screen also. Shri Rupa Shri Sanatana Bhakta Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath. All glories to Shri Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Shri Jiva Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami. ईशाए गोशाए करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण. I offer my obeisances to the feet of these 6 Goswami. By offering them my obeisances, all the obstacles to the devotional are destroyed and all the spiritual desires are fulfilled. Before starting glorification of Goswami, I'm going to talk about 6 Goswami basically. So they are Rup Goswami, Sanatan Goswami. They are the chief Goswamis, and the others are the Jiva Goswami, Gopal Bhatt Goswami, and Raghunath Das Goswami. I try to just give a very little introduction of all the Goswami, and I just share one pastimes of those Goswamis, either with their personal deities or some other pastimes. I just randomly pegged it up because there are so many pastimes. Because when we are glorifying our acharyas and these special devotees of Lord, then each moment of their life is a lesson for us. So it's so difficult to just summarize everything in a so small time, but still I'm trying to do so. So in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 1.33, Prabhupada is saying, the 6 Goswami under the direction of Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami studies various Vedic scriptures and pick up the essence of them and the devotional service of the Lord. And this means that all Goswami wrote many scriptures on devotional service with the support of a Vedic literature. जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि बीच-बीच में जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम को भी रेफर किया हुआ है. So that's what the Prabhupada is saying also here, that the Goswamis wrote the scriptures, but they give a support of the Vedic literatures also. So the devotional service is not a sentimental activity. The essence of Vedic knowledge is devotional service, as confirmed in a Bhagavad Gita 15.15. Vedesh sarvesh aham deva vedesh. All the Vedic literatures aim at understanding Krishna. How to understand Krishna through devotional service has been explained by Sri Rupa Goswami and Sanatan Goswami with evidence of all Vedic scriptures. They have put it so nicely that even a rascal or a first-class fool can be delivered by the devotional service under the guidance of Goswamis. So in our Parampara, these Goswamis are very important. Through few moments, I will try to glorify and just tell how they are very important for us, for our devotional service. So we keep on praying at their lotus feet for the guidance. So I'm starting with the Srila Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami Prabhupada and the Sanatana Goswami are the brothers. So I just give their little introduction about them. So both are born, they are the 3 brothers actually. So one is a Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Anupam, Srila Anupam. So basically they are the 3 brothers, and initially they were staying in a Ramakeli place. बंगाल में एक प्लेस है रामकेली, उस जगह पर वो रहते थे, ये तीनों के तीनों ब्रदर्स. और उस टाइम पे क्या था कि मुगलों का राज था, तो जो मुगल होते थे, तो उनको ये पता था कि जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे वो किंगडम संभालते थे, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस पोजीशंस है वो क्या देते थे, ब्राह्मणस और जो सनातन धर्म को फॉलो करते थे, वैष्णवर्स को देते थे, बिकॉज दे नो दैट दे आर वेरी
intelligent, and they Mughal themselves don't have this intelligence, so they always by forcefully they give, because obviously the brahmanas hain or they don't want to work under them, but they forcefully tell them to work under them because they know कि उनके पास जितनी intelligence है वो किसी के पास नहीं है. So उन्होंने तो उस टाइम पर जो था नवाब हुसैन शाह थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे उनको जबरदस्ती वहां का फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, और उनका क्योंकि देवर फ्रॉम सनातन धर्म, सो उनका नाम भी चेंज कर दिया. नाम क्या हो गया था उनका, जो सनातन गोस्वामी थे उनका नाम था साकर मलिक, और जो रूप गोस्वामी थे उनका नाम था दबीर खास. So they were a prime minister and the finance minister. They are the very big position. So they having lots of name and fame, lots of money are getting from that Mughal Sampradaya. They're still not satisfied. So one day they met a Chaitanya Mahaprabhu, and after that their life has changed. So they left their position. They were although having such a big position, but not considering that position to be important, because definitely they are very special devotees of Krishna. They are liberated souls, they are Nitya Siddha. So for them it's nothing like that. तो जो रूप गोस्वामी वो पहले सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास गए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 इंस्ट्रक्शंस दी वहां पर. There was the 10-day discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Rup Goswami. So I'm just squeezing out everything in very small so that I can give introduction of all Goswamis. So Chaitanya Mahaprabhu gave 4 instructions to Rup Goswami, that you both brothers do these 4 things mainly. So what were the 4 things? To uncover the lost sites of Krishna pastimes. So क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद पुरी में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा कि जो भी भगवान के पास टाइम्स हैं, कि भगवान ने कहाँ पर कालिया दमन वाली लीला करी, कहाँ पर अलग अलग लीलाएं, कहाँ भगवान का बर्थ प्लेस कहाँ है, भगवान की और बाकी जो लीलाएं हैं बाल सखाओं के साथ और गोपियों के साथ, वो जो भी लीलाएं हैं जहाँ जहाँ की, वो सब लुप्त हो चुकी हैं. वहां पर किसी को पता ही नहीं है कौन सी प्लेस पे कौन सा पास टाइम है. तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, गो देयर एंड रीडिस्कवर दोस लॉस्ट पास टाइम. सेकेंड, टू इंस्ट्रक्ट द डीटीज ऑफ अ लॉर्ड, टू इंस्टॉल द डीटीज ऑफ अ लॉर्ड एंड अरेंज फॉर देयर वर्शिप. उन्होंने कहा कि जो बाकी डीटीज हैं जो कुछ लुप्त हो चुकी थी, और वहां पर आप जाइए, उन डीटीज को इंस्टॉल कीजिए और उनकी वर्शिप भी कीजिए. And to write a books on Krishna consciousness and to teach the rules of devotional life. They have written lots of books. They majorly I have studied as a little bit as Nectar of Instruction and Nectar of Devotion, which is written by Rup Goswami. So इसमें से now I'm just going कि जो रूप गोस्वामी हैं, I'm just going to share with you कि रूप गोस्वामी ने जो गोविंद देव जी है वो कैसे अपीयर हुए. तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 इंस्ट्रक्शंस दी थी करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, वो स्क्रिप्चर्स भी लिख रहे थे, वो उन्होंने काफी सारी चीजों को रीडिस्कवर भी कर लिया था वृंदावन में जाकर, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में. बट स्टिल उनके हृदय में बहुत ज्यादा वो था, एक इनकम्प्लीटनेस फील कर रहे थे कि मैं गोविंद देव जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, गोविंद देव जी मुझे नहीं मिल रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु मुझे कहा था कि गोविंद देव जी को एस्टैब्लिश करने के लिए, बट वो मिल नहीं रहे हैं. वो घर घर जाते थे, जहाँ वो ब्रजवासी थे उनके सबके घरों में गए, बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उनको जो है गोविंद देव जी नहीं मिल रहे थे. वो बहुत ही हृदय से बहुत दुखी हो रहे थे कि गोविंद देव जी मुझे नहीं मिल रहे हैं. सो हम इस चीज से मुझे ऐसा समझ में आया इन चीजों से कि फॉर देम इट्स नॉट भगवान से बात करना या भगवान को जानना उनके लिए, बिकॉज दे आर नित्य सिद्धा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. By this they are showing that how the instructions of Chaitanya Mahaprabhu is important for them. That Chaitanya Mahaprabhu ने एक instruction दी है, अगर गुरु ने कोई instruction दी है, तो how they are taking it sincerely. Maybe they are not able to do at their own efforts, but they were saying that we should try sincerely our efforts. We should not say कि okay fine हो रहा है नहीं हो रहा fine. But they similarly we can see in a life of Prabhupada also that how he has taken an instruction of his guru in his life very strongly. So that this is the lesson that Rup Goswami is also teaching us, that how important the instruction of our spiritual master is. So he was just lamenting, and he was sitting at the bank of Yamuna. He was lamenting कि गोविंद देव जी नहीं मिल रहे हैं. तो वहां पर एक ग्वाल बाला आया, तो इतना सुंदर था कि वो जो रूप गोस्वामी मंत्रमुग्ध हो गए उनकी सुंदरता देखकर. वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हृदय को छू गया,
और फिर वो उनके साथ बात करने लग गए, ग्वाल बाले के साथ, और उनके साथ अपना हृदय शेयर करने लग गए। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं गोविंद देव जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो जो ग्वाल बाला है वो मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे पता है कि गोविंद देव जी कहाँ हैं। गोविंद देव जी जो है ना, यहाँ पर एक उन्होंने बताया कि एक गोमती हिल है, गोमती हिल पर एक सुरभि, वहां पर एक सुरभि काऊ आती है और वो स्वतः ही दूध, उसके जो थन से है वो स्वतः ही दूध बहने लगता है। कोई दोता नहीं है वहां पर जाकर दूध, बट स्वतः ही बहने लगता है। तो वहां पर उस जो टीला है, वो उस टीले के नीचे जो है गोविंद देव जी हैं। तो वो कहते हैं चलो बाबा जी, बाबा आपको मैं लेके चलता हूँ। तो वहां तक लेके जाते हैं और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान। तो देन रूप गोस्वामी को रियलाइज होता है कि जो ग्वाल बाला था वो गोविंद देव जी स्वयं थे, जो मुझे डायरेक्शन दिखाने के लिए आए थे। सो देन ब्रजवासी को बुलाते हैं और वहां पर वो जो है वो टीले में से गोविंद जी को निकालने लगते हैं। और वहां पर जो है आकाश से बलराम जी की आवाज आती है और उनको डायरेक्शन दे रहे होते हो कि नहीं, यहाँ नहीं करना, वहां नहीं करना। और इस तरीके से वो गोविंद देव जी को गोविंद देव जी की स्थापना करते हैं और बहुत अच्छे से उनका वो ऑफरिंग्स वगैरह और सब कुछ किया जाता है। उसके बाद से जो रूप गोस्वामी हैं उनकी वर्शिप करने लगते हैं। So this is a small story related to how Govind Dev Ji appear by the mercy of Srila Rupa Goswami. So now, as I already discussed about Sanatana Goswami, he's a brother of Rupa Goswami. So I just want to share a pastime of Madan Mohan Ji. So जो एक बार क्या हुआ था, सनातन गोस्वामी जैसे, क्योंकि वो लोग मधुकरी करते थे, एक ब्राह्मण के घर में गए। उस ब्राह्मण ने उसको उसका नाम था श्रीमान पुरुषोत्तम चौबे। तो उनके पास एक डीटी थी, बहुत ही सुंदर डीटी थी। तो उन्होंने उसको ऑफरिंग करी और उन्होंने देखा कि जो वो डीटी को है वो वात्सल्य भाव में उनकी सेवा कर रहे हैं उस डीटीज की। तो जो सनातन गोस्वामी उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं डीटीज की ऐसी सेवा नहीं करनी, आप इस तरीके से करो, आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो आप। तो ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि रात में नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद जो सनातन गोस्वामी है, उनके स्वप्न में मदन मोहन जी आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं मदन मोहन हूँ, तो तुम मेरे पास आए थे और जो उसके चौबे जी की जो है पुरुषोत्तम चौबे जी को आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो वो वात्सल्य भाव में सेवा कर रहे थे, मैं उससे से प्रसन्न था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही आएगा ब्राह्मण आपके पास मुझे आपको दक्षिणा में देने के लिए। तो आप जो है प्लीज उसे अपने पास रखिएगा और उसकी सेवा करिएगा। सो इस तरीके के बाद कुछ दिनों के बाद जो है जो वो है ब्राह्मण है, वो दक्षिणा में सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी दे के जाते हैं और फिर वो मदन मोहन जी की सेवा करने लगते हैं। फॉर दिस आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑडियो with you where the Srila Prabhupada is telling how the Sanatana Goswami used to serve Madan Mohan ji, and what should be our mood to serve the deities, to serve the Lord at our home. Madan Mohan, he was talking with his deity. And Krishna, just like Madan Mohan, he was talking with Sanatana Goswami. Madan Mohan, Sanatana Goswami at that time had no temple. He was hanging his deity on the tree. So Madan Mohan was talking with him, Sanatana, you are bringing all these dry chapatis and it is stale, and you don't give me even little salt. How can I eat? Sanatana Goswami says, sir, where shall I go? Whatever I get, I offer you. You kindly accept. I cannot move, old man. So Krishna had to eat that. Because the bhakta is offering, he cannot refuse. Jimang bhaktya prajach. Real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. What you have got, what is your value, and what is the value of your things? There is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it.
I have no qualification. I am most rotten fallen. But I have brought this thing for you. Please say. This will be accepted. Don't be perturbed. Always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you. So this way Srila Prabhupada is telling us that how the Sanatana Goswami is serving a Madan Mohan and what should be our right move to serve the Madan Mohan. So I just want to share very small one more pastime of Sanatana Goswami. Sanatana Goswami used to take a parikrama every day. He used to take a parikrama of Govardhanji, and he was getting old and old day by day. So one day what happened? The Madan Mohanji appeared. So understanding the difficulty of his pure devotee, Shri Madan Mohanji one day said, "Baba, you are too old. Do not take so much of trouble to walk around the Govardhan hill every day." Sanatana Goswami ने reply किया, "This is one day of daily activity of my bhajan. I must maintain it. Since you are old," so Madan Mohan ji replied again कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, so you may now give up this vow. ऐसा कहा और सनातन गोस्वामी ने सुना अनसुना किया and he start walking. It will never give up my religious principle. So फिर क्या हुआ, एक दिन जो सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे, he fainted. So again Madan Mohan ji appeared and he gave him a Govardhan Shila, जिसमें कि जब भगवान खड़े हुए तो वो गोवर्धन शिला पिघल गई, जिसमें भगवान के पैरों के चिन्ह और गाय के पैरों के निशान और एक बंसी का निशान है उसके अंदर। और भगवान ने उनको कहा कि अगर आप इसकी परिक्रमा 4 बार करेंगे तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा जो आपने वाव लिया वो आपका वाव भी फुलफिल होगा और आप परिक्रमा भी कर पाएंगे। So this Shila is we can have a darshan of these Shila in Radha Damodar Mandir in Vrindavan. You can see in the picture that there is a lotus feet of Krishna. One side there is a lotus, then there's footprint of cow, and one is the footprint of Bansuri. So this is the small leelas related to the Sanatana Goswami. Now I just described the Raghunath, Srila Raghunath Bhatt Goswami. So Srila Raghunath Bhatt Goswami is the son of Tapan Mishra. जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे तो वो वाराणसी जब गए थे तो वो तपन मिश्रा के घर में रुके थे। तो जो सनातन गोस्वामी थे वो बहुत छोटे थे उस टाइम पर, लेकिन उनको बहुत प्रसन्नता होती थी चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहकर। वो भगवान के जो है बर्तन धोते थे, उनके लिए छोटी छोटी सर्विसेज करते थे, उनको बहुत आनंद आता था। फिर जब चैतन्य महाप्रभु पुरी चले गए तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप अपने पेरेंट्स की सेवा करिए, जब उनके पेरेंट्स की सेवा कंप्लीट हो गई तो ही जॉइंड चैतन्य महाप्रभु इन पुरी एंड ही सर्व चैतन्य महाप्रभु इन पुरी फॉर 8 months। तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, बताया जाता है कि he had a beautiful voice. He can just like a cuckoo bird, and when he would sing the Bhagavatam words, he would sing each slok in 3 or 4 different melodies, and it was so pleasing to hear. जैसे हमने कल भुवन मोहिनी माता जी से भी सुना था, उन्होंने एक गाया था, इतना सुंदर था भागवतम जब वो गा रही थी। Similarly, we can imagine that when the Goswami used to sing that Bhagavatam, how melodious it would be, or it's glorified that his voice is very beautiful, and वो अलग अलग मेलोडीज में जो है भागवतम का पाठ करते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। एंड ऑल्सो जब वो 8 months के लिए वहां पर थे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे, तो ही यूज्ड टू कुक फॉर हिम एंड दे सेड, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि दैट ही कुक, जो वो बनाते थे वो इतना नेक्टेरियंस होता था कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही रिलिश करते थे और बहुत ही वो एंजॉय करते थे। तो 8 months उन्होंने वहां पर चैतन्य महाप्रभु को सर्व किया। देन चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि यू कैन ज्वाइन बैक रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी इन वृंदावन, एंड उसके बाद से वो वहां पर गए और वहां पर गोविंद देव जी की सेवा करने लगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को भेजा वृंदावन, तो उन्होंने उनको 2 चीजें दी। क्या 2 चीजें दी? उन्होंने प्रसाद दिया जगन्नाथ जी का, जो वहां के फेस्टिवल में से मिला था, और उन्होंने अपने गले की तुलसी माला दी। और जो तुलसी माला थी वो कितनी थी? 14 गिट मतलब कि जो एक हाथ जितने पहले गिट से नापते थे, देयर वाज नो मीटर स्केल और समथिंग लाइक दैट।
So वो दिया, and some betel nuts that were also be a Mahaprasad of Jagannath. He gave them to Raghunath and he kept them a very special place and he proceeded to the Vrindavan. So this is a small thing I just want to share about Raghunath Bhatt Goswami. Now just glorify Srila Jeev Goswami. जैसे मैंने बताया था कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है वो 3 ब्रदर्स थे. जो थर्ड ब्रदर था उनका नाम जो है चैतन्य महाप्रभु में अनुपम दिया था. उनके बेटे थे जीव गोस्वामी. ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे. और उन्होंने भी फिर बाद में जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में ज्वाइन किया. So Prabhupada it says that Jiva Goswami wrote 25 books on a Vaishnava philosophy and eternal pastime of Radha and Krishna. He composed over 4 lakhs verses in perfect rhythmic Sanskrit. So he was very scholarly person. Prabhupada is saying is very scholarly. His divine Srila Prabhupada explained that all philosophers in the world, Jiva Goswami is the foremost. So जितने भी philosopher अभी तक हुए हैं, ना ही कोई इतनी ज्यादा कंपोज कर सकता है और इतना ही इतने एक्सपर्टली कंपोज कर सकता है जितना कि जीव गोस्वामी ने किया. So again I just want to share one pastime of and also yes जो जीव गोस्वामी है उन्होंने बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी जी की सेवा करी कि रूप गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुद से काव करके उनको राधा दामोदर जी की डीटीज दी और वो इतनी सुंदर तरीके से सेवा करते थे जीव गोस्वामी राधा दामोदर जी की. कहा जाता है कि जो दादा दामोदर है वो स्वयं उनसे बात करते थे बहुत ही अच्छे से. और जब उनको वो जो भी प्रसादम ऑफर जो भी भोगा ऑफरिंग करते थे वो उनके सामने ही पाते थे और उनसे बहुत अपने हृदय की बात शेयर किया करते थे. इतनी सुंदर तरीके से राधा दामोदर जी को सर्व किया करते थे. So I just want to share one small pastime of Jeev Goswami that once that is on a defeat of Roop Narayan. So there was a person named Roop Narayan. So उसको उसने अपने आप को बोलता था वो that person used to say claim himself as a दिग्विजय पंडित. दिग्विजय मतलब कि जिसने सब पे विजय प्राप्त कर ली हो. तो वो अपने साथ एक पर्चा लेके घूमता था और जिसमें लोगों से वाद विवाद करता था और जो हार जाते थे उनसे वो साइन करवाता था वहां पर. तो एक बार वो वृंदावन में आया तो उसने सुना कि यहाँ जो रूप गोस्वामी है और जो सनातन गोस्वामी है दे आर वेरी स्कॉलरली पर्सन. तो उसने सोचा कि मैं इनके साथ जाकर वाद विवाद करूंगा और इनको आई विल डिफीट देम. सो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं. तो बट रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट द कि हम लोगों को जो भक्त लोग हैं वो सिर्फ कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं. तो वो बोलते नहीं हम लोगों को नहीं करना. तो वो रूप नारायण बोलते हैं कि ठीक है आप मुझसे जो है जो वो पर्चा है जिसको वो बोलता था जय पत्र तो उस पे आप साइन कर दीजिए एंड एक्सेप्ट योर डिफीट कि आप मुझसे हार गए. तो ही सेड ओके फाइन. तो रूप गोस्वामी बिकॉज दे वर वेरी हम्बल तो उनके ऊपर साइन कर देते हैं. तो जब वो जा रहा होता है तो उन्हें जीव गोस्वामी मिलते हैं. जीव गोस्वामी पूछते हैं तो वो कहते हैं देखो आपके जो गुरु हैं जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट करी है. वो उनको दिखाता है, उनके साइन दिखाता है. तो जीव गोस्वामी जानते हैं कि जो हमारे गुरु महाराज हैं वो जो है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी जो है he won't don't want to argue with them or don't want to have a वाद विवाद with them. तो वो बोलता है कि मैं आपके साथ वाद विवाद करूंगा. तो कहा जाता है कि वो उनके साथ उन्होंने रूप नारायण के साथ वाद विवाद किया और कई दिनों तक चला और उसके बाद उन्होंने रूप नारायण को हरा दिया और वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ रूप नारायण और वृंदावन छोड़ के चला गया. तो जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो जीव गोस्वामी है उनको बोला कि you wasted your precious time debating with the mundane scholar only for your own reputation. So no one would have any desire for honor can be lived in the land of Vrindavan. Therefore you must leave immediately. So उन्होंने बहुत डांटा जीव गोस्वामी को और उसे बोला वहां से चले जाने के लिए. बट उसके बाद सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को समझाया कि what was the actual mood of जीव गोस्वामी to do a debate with that Roop Narayan. So what the Acharya says that Jeev Goswami did not do this for his own name. He did this to protect the name of his guru and whole sampradaya. Therefore, because they have so much affection for his guru, so he don't feel उनको इतना हर्ट हुआ कि मेरे गुरु महाराज जो हैं उनके लिए वो डिफीट वहां पर साइन है उस जय पत्र के अंदर. So because of that he did that. Therefore he was perfectly correct in what he did. So Srila Prabhupada explained that a devotee is more humble than a blade of grass.
So when any inflection comes upon him, so he will not react. जो devotee है वो react नहीं करता अगर उस पे कोई problem आती है. But to protect the dignity of Krishna and other Vaishnavas, that devotee can be bold. So that's this, through this pastime, Jiva Goswami is saying that anything, if you are somebody is doing bad for you, you didn't react, but if somebody is doing bad thing or something for Krishna or Vaishnava, they boldly react for that one. So next, I just try to glorify Srila Gopal Bhatt Goswami. So Gopal, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चैतन्य महाप्रभु है 6 साल तक he used to travel through India. तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया, वो साउथ इंडिया भी गए थे. तो वहां पर उस टाइम पे जो था वो चतुर्मास्य चल रहा था. तो वहां पर उन्होंने जब चतुर्मास्य चल रहा था तो साउथ इंडिया में उन्होंने श्रीरंगम जी का शेल्टर लिया. और वहां पर एक डिवोटी थे, वेंकट थे उनका, और उसके जो वेंकट थे उसके घर पे रहे, और उनका पुत्र था गोपाल. तो जो वेंकट है वो जान जाते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, तो वो गोपाल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए. और वो बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं. और लेटर ऑन जो चैतन्य महाप्रभु हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है उनके शेल्टर में भेज देते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ. सो दिस इज, तो वहां पर वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे होते हैं. So what will happen? The loving relationship between Rup Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Jeev Goswami was so wonderful, so sweet, so pure. They had such a deep attraction to each other in serving a Krishna together. So this is showing that how it's for serving a Krishna, how cooperation and coordination is so important. So Gopal Bhatt would help a Rup Goswami in his worship of a deity of Govind Dev Ji. One day what happened कि जो गोविंद देव जी हैं वो रूप गोस्वामी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि गोपाल भट्ट जो है उनके अपने एक डीटी होने चाहिए, वो अपने डीटी को सेवा करें. जैसे हमने पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी डीटीज की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीटी एंड वर्शिप ऑफ डीटी. सो सिमिलरली जैसे गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के सपने में आए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है गोपाल भट्ट के सपने में आए कि तुम नेपाल जाओ, वहां पर जाकर शालिग्राम शिला लेके आओ. तो उसके बाद क्या होता है कि वो वहां पर जाते हैं और वहां पर एक डिप लेते हैं. तो जो उनके कमंडल होते हैं उसके अंदर कुछ शालिग्राम्स आते हैं, बट उनको लगता है नहीं, फिर वो बहा देते हैं. Then he dip again. Then again same shaligrams come in his kamandalu. Then he do the same process. But when the third time he comes, there are the 12 shaligrams that उस दिन भी माता जी ने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से. जब हमारी शालिग्राम वहां पर उसमें हमने डिस्कशन की थी, तो माता जी ने यही लीला एक्सप्लेन करी थी कि किस तरीके से रूप गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम थे, उसमें से एक जो शालिग्राम थी वो दामोदर शालिग्राम थी. सो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो उनकी वो शालिग्राम की वर्शिप करते थे. तो एक दिन क्या हुआ, एक मर्चेंट आया था जिसके पास बहुत सुंदर ही भगवान की ज्वेलरी और भगवान के वस्त्र थे. तो वो उनको दिखाने लगा, तो उसने बताया कि मेरे पास तो सिर्फ शालिग्राम है, तो मैं ये भगवान की श्रृंगार नहीं करता हूँ. बट फिर भी वो भेंट के रूप में गोपाल भट्ट जी को कुछ वस्त्र और आभूषण दे जाते हैं. तो जो वो दिन होता है वो होता है एक्चुअली लॉर्ड नरसिम्हा अपीयरेंस डे होता है. सो स्तुति करते करते जो गोपाल भट्ट जी हैं वो शालिग्राम से प्रेयर करते हैं कि वो प्रेयर करते हैं शालिग्राम जी से कि जिस तरीके से आप खंबे से बाहर निकले थे, उसी तरीके से आप इस शालिग्राम जी से बाहर निकलिए, ताकि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं, आपको आपकी वर्शिप कर सकूं. सो वो प्रेयर करते उस दिन प्रेयर करके सो जाते हैं. और नेक्स्ट डे जो है जब वो उठते हैं, हरे कृष्णा, जब हरे कृष्णा, I just take 5 more minutes. Sorry, it's 12:30 already. I just take 5 more minutes to complete. So next day जब वो देखते हैं तो उसमें से बहुत सुंदर जो है ये deities appear होते हैं. So it says that 3 principal deities. So you can see this beautiful form of Sri Radha Raman ji. So this says that the 3 principal deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda Dev ji, and Gopinath. These 3 deities
for the life and soul of a Gaudiya Vaishnava, and especially the life and soul of a Gopala Bhatt Goswami. This particular deity, the Radha Raman, it's explained in our Bhakti Shastra that the manifestation in a form is such a way that the form of his feet, like जो हमें पता है, I just explain one more. तो मदन मोहन जी हैं जो carved किए गए थे, उसमें बताया जाता है कि उनके जो feet है that is similar to Krishna. गोविंद जी का जो उधर सेंटर पार्ट है that is similar to गोविंद देव जी, and कृष्णा का जो गोपीनाथ जी का मुखमंडल है वो similar to the गोपीनाथ जी. So वो कहते हैं कि जो राधा रमन जी जब अपीयर हुए त्रिभंगी फॉर्म में, so ये he was complete himself. जो इनके चरण थे वो मदन मोहन जी जैसे थे, इनका जो उदर था वो गोविंद देव जी जैसा था, और जो इनका मुखमंडल था वो गोपीनाथ जी जैसा था. So is a complete. By seeing this, जो गोस्वामीज हैं उन्होंने इनका नाम रखा Radha Raman, because he is the Raman. Raman means he just stood on the heart of Srimati Radha Rani. So that's why they gave the beautiful name of this deity, Radha Raman. And his appearance day is next to the appearance day of Lord Narasimhadev. So जिस दिन अभी 6th of May को जैसे नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो 7th को मीन्स नेक्स्ट डे जो है राधा रमन जी का बहुत सुंदर अभिषेक होता है वहां पर, बहुत ही सुंदर. और these deities very small, it's just 12 inch deity and very beautiful. जैसे माता जी ने भी उस दिन बताया था कि you can see and see the that how his expression also changes time to time. So I just take 5 more minutes to just glorify Srila Raghunath Das Goswami. So Raghunath Das Goswami जो हैं, जो इनके फादर थे वो एक बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड थे और टैक्स कलेक्टर थे बंगाल के. कहा जाता है कि इतने ज्यादा रिच थे कि उनकी रिचनेस को कंपेयर किया जाता है इंद्र की रिचनेस के साथ. सो हिज फादर नेम वाज गोवर्धन मंजूमदार. तो और कहा जाता है कि हिज मंथली जो उनके फादर थे उनकी मंथली इनकम जो थी वो थी 2 लाख सोने की मोहर जो उस टाइम पे. एंड आई वाज लिसनिंग टू गुरु महाराज लेक्चर, ही वाज टेलिंग एट दैट टाइम 10 रुपीस पर दैट 1 तोला का जो गोल्ड का प्राइस था उस टाइम पे 10 रुपीस पर तोला था, और उनके पास गोल्ड कॉइन्स थे कितने 2 लाख उस टाइम पर. दैट इज देयर मंथली इनकम. दे वर सो मच रिच. बट क्योंकि वो दो जो ब्रदर्स थे गोवर्धन मजूमदार और उनके जो ब्रदर था हिरण्या मजूमदार, तो उनका बेटा जो एक ही रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनके इकलौते बेटे थे, तो दे वर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम. बट किसी तरीके से अपने प्रीस्ट के थ्रू जो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने प्रीस्ट के थ्रू उनसे मिले, अपने प्रीस्ट के थ्रू हरिदास ठाकुर जी से मिले, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु से मिले. और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उनको लगता था मैं घर छोड़ के भाग जाऊं. बहुत बार उन्होंने कोशिश की घर छोड़ के भागने के लिए, बट उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ ही नहीं, बल्कि वापस कर लिया और फिर बाद गार्ड्स लगा दिए. फिर जब एक दिन उनको चैतन्य महाप्रभु मिले तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु बोला कि आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस एंड आई वांट टू टेक अ रेनंसिएशन. तो उस टाइम पर आई विल टेल लेटर ऑन व्हाई उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि आप रेनंसिएशन नहीं लोगे, आप डिटैच होके मटेरियलिस्टिक लाइफ में सर्व करोगे. सो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि योर रेनंसिएशन इज जस्ट लाइक अ मंकी रेनंसिएशन बोला उनको. मंकी रेनंसिएशन क्यों बोला? कि मंकी जो है वो जंगल में रहता है और कंदमूल खाता है और तो कुछ होता नहीं है उसके बाद, बट स्टिल ही हैव अ डिजायर टू एंजॉय विद द फीमेल मंकीज. सो दैट्स व्हाई Chaitanya Mahaprabhu denied his renunciation. So he starts serving his family very nicely, but later on someday after what happened, नित्यानंद प्रभु उनके घर के पास से एक जगह थी पानी घाटी, वहां पर आए. तो उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, तो he goes there और उनको वहां पर प्रणाम किया. तो प्रणाम किया तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया. तो नित्यानंद प्रभु ने अपने जो उनके डिसाइपल्स थे उनको बोला कि ये जो चोर है इसको बुला के लेके आओ, ये दूर से प्रणाम कर रहा है, ये चोर है, चोर को बुला के लेके आओ. So, जब वो बुला के लेके आते हैं तो वो रघुनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम क्या हो, चोर हो, तुमने चोरी की है. तो सो उसको बोला कि चोर हो तुम और तुम्हारे को जो है तुम्हारे को पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट क्या मिलेगी? तुमको सबको दही चिवड़ा खिलाना है, दही चिवड़ा. So because he was rich, for him it's not difficult, anything is not difficult for him. So he's arranged all the big pots. उन्होंने big pots arrange करी और सबको जो दही चिवड़ा फेस्टिवल है. हरे कृष्णा. Somebody mic is on, sorry.
सो बहुत सुंदर दही चिवड़ा फेस्टिवल हुआ। जैसे जैसे आसपास के गांव के लोगों को पता चला तो वो लोग भी आ गए इस फेस्टिवल में ज्वाइन करने के लिए, और सब कोई अपने घर से सामान लेके आने लगा। दही चिवड़ा, दही चिवड़ा इज बेसिकली चिप राइस, जो आपका पोहा होता है, कंडेंस्ड मिल्क एंड द फ्रूट्स एंड द मिल्क, these the things are ingredient of this dahi चिवड़ा। सो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उसमें क्या हुआ कि इतने लोग आ गए कि पहले वो बताते हैं कि जो ये बरगद का पेड़ है उसके आसपास, फिर जब लैंड भी कवर हो गया तो जो फर्स्ट स्टेप था गंगा जी का, क्योंकि ये जो जगह है वो गंगा जी के किनारे है, गंगा जी पे, और वो भी जगह भर गई तो गंगा जी के अंदर, कहते इतने इतने अंदर तक चले गए थे गंगा जी के कि गले से नीचे तक गंगा जी थे और हाथ में डोना पकड़े हुए, एंड दे वर एंजॉयिंग रिलिशिंग दिस दही चिवड़ा। सो उसके बाद से हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है पानी हाटी में, दही चिवड़ा फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है वो निर्जला एकादशी के नेक्स्ट डे होता है, वहां पर अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल जैसे हम लोग गए थे वहां पर पानी हाटी, तो राधापत प्रभु जी बता रहे थे कि हर साल जो है डिवोटीज जो दही चिवड़ा फेस्टिवल मनाने आते बढ़ते जाते हैं, जैसे वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस्कॉन वहां पर, जैसे हर साल बढ़ रहे हैं और हर साल हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ती है इस दही चिवड़ा फेस्टिवल के टाइम उसको बनाने के लिए। So here I just want to explain one thing, one last thing, that this is the tree still exists in Panihati. When हम लोग जब गए थे, हम लोग इसके दर्शन किए थे, हमने परिक्रमा की थी, वेरी स्पेशल प्लेस जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी ने बैठे थे, और वहां पर there was conversation between नित्यानंद प्रभु and रघुनाथ दास गोस्वामी. So I just want to explain one thing कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने जो रघुनाथ दास जी हैं उनको थीफ कहा, चोर कहा। क्यों कहा? जैसे Guru Maharaj was explaining, I was listening to the lecture on Raghunath Das Goswami. Guru Maharaj explaining that Krishna is a property of spiritual master, and if you try to approach Krishna without spiritual master, then you are thief. क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो सबसे पहले थे जो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, और वो नित्यानंद प्रभु के मिलने से पहले मिले थे चैतन्य महाप्रभु से। सो दैट्स व्हाई ही, और वो बार बार चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, बार बार चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना चाहते थे। So that's why Nityanand Prabhu said you are a thief because you are trying to approach Chaitanya Mahaprabhu without Nityanand Prabhu. And but Nityanand Prabhu is so merciful कि उनको realize करने के लिए इतना सुंदर festival ही just उनको as a punishment उनको festival celebrate करने के लिए कहा गया, जो कि festival बन गया. So this teaches us a lesson that yes, we should not approach a Krishna or we should not approach Chaitanya Mahaprabhu without a spiritual master. So after that जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अप्रोच किया और नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ कर दिया, तो जब उसके बाद दोबारा से वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास कि मुझे संन्यास लेना है, तो then that time चैतन्य महाप्रभु accepted him and then he starts serving Chaitanya Mahaprabhu there. So these are the few pastime I just try to glorify. It's just like a drop in the ocean. I'm so sorry, I just take 10 more minutes, and thank you so much. I hope I try just give a very small glimpse of glorification of all the 6 Goswamis. Thank you so much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much, Mataji. It was very nice. और छोटे से टाइम में ही आपने किसी गोस्वामी के बारे में बता दिया. So thank you so much. And जितना भी गोस्वामी के बारे में, devotees, I can tell you, आप जितना गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे उतना ही हमारा जो हृदय है वो साफ होता है, और उसमें we get devotion to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu. Thank you so much, Mataji. So over to you, Saurabh Prabhu. Prabhuji, just 1 minute. Sure, Prabhu.
Hare Krishna, Sir Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Please go ahead. Okay. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Kathanchana smrate yasmin dushkaram sukaram bhavet Vismrate viparitam syat Shri Chaitanyam namamitam. Hare Krishna. So I am not at all qualified to speak, but by the mercy and instructions of Giriraj Prabhu, I am speaking. And I seek blessings of all the senior devotees and all the assembled Vaishnavas here, that I may speak something which is of some use. And whatever I am speaking for my own purification, and so that my faith gets more deepened in Vedic scriptures. And personally, I am taking this as an opportunity to serve my spiritual master and Srila Prabhupada and all the devotees, and I'm very grateful for this opportunity. So I will share my screen. Yeah. Share screen. Are you able to see the screen? Yes, Prabhuji. What are you seeing? But it's not nothing. It's written click to exit full screen. Okay. You can It do a has come. slide. Yeah, it's now come. You can do a slideshow, Prabhuji. Okay. Are you able to see? Yes, Prabhuji. Now we can see. Now again it's disappeared, Prabhuji. Okay. Sorry. Okay, so this is the theme of today's topic. Our today's discussion, appreciating Vedic culture. So we can discuss many topics under this theme, and so I have taken these topics like sacred universe, scriptures, their mythology, and so this we will be discussing under this theme of appreciating Vedic culture. And like everything has some objective, like
whatever we read, any book or any movie, so, or any TV serial, anything, whatever is made, it is made with some objective in mind. So I have these objectives for this presentation. So first is how we observe the world or universe around us. It has a profound impact on our understanding of ourselves. So like the understanding which we have of our world around us, it also impacts of our understanding of ourselves, who we are. And second is to bring some appreciation, some faith towards Vedic culture, no matter how little. And third is, so how modern civilization is leading to godless civilization. So these are my objectives. There is one more fourth objective, which is a hidden objective, which will be revealed at the end. So let's start. So we are saying sacred, but says only universe. So this is our solar system as of now, which we know, right? So this we have learned right from our school days. So we have sun, and then we have this. Initially there were 9 planets, and Pluto then later was removed. So now we have 8 planets. So we have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and all those planets. And sun is at the center of universe, right? So now what is beyond Neptune? So what we have been taught is it's all vast, infinite, empty space, right? So yeah, it's all empty space, infinite space, and Earth is the only place where we have life. So what are we looking for now? We are looking for some answers. So are we alone in this vast empty universe, and is there any life outside of Earth? So we are looking for these answers. So this is our understanding of universe, how we have been taught in schools, and what our society follows, and what we discuss with each other. So now let's see how universe is sacred from the point of view of our Vedic scriptures, which is mostly in 5th canto of Srimad Bhagavatam. So, so what approach I'm going to take is I'm going to take a top-down approach. Like we will take a very high-level view and then come down, zooming in on things, and then we will see, because it's a very complex subject matter. So our scripture says there is Mahavishnu who is lying in this ocean, and out of him, when he exhales, infinite universes are coming out. So if you see all these circles, these are universes, one universes. So they are coming out from Mahavishnu. So now let us take a look at one of this universe. So this is one universe, Brahman, and this is the shell, outer covering of the universe. So now we are going more and more deeper into this universe now. So if you see, there is a disk. It is called as Bhumandal disk, which divides this universe into 2 halves, upper half and lower half. So now we are zooming into the disk. What is this disk which we have seen here? So this is the disk we are looking at. Now this is like the top level view of the disk. So here, whatever we are seeing in this photo, everything has meaning, nothing is meaningless. So I will just keep on telling some details. We won't go into much detail because this is a very complex subject matter. And so the outer gray area, let me see if I can annotate. Okay. Okay, it's not showing me the option. So inside the black area, that area is called Alok Varsha. It is all darkness, and the golden area is called as Kanchan Bhumi. It's a golden land. Now, if you go more inside it, so we have again this Kanchan Bhumi, and then we have some islands. So what we are looking at is, the scriptures tells us that this Bhumandala, which we are looking at from the top, this is a series of 7 islands, which are concentric islands. So what is concentric island? So if we have circles drawn of different sizes, and if they have same center, then they form concentric circles like that. So these are 7 islands, each with a more and more larger size.
So we will now see inside this golden land, the name of that island is, it's so if you see this blue circle, so that's the ocean. That's the ocean of fresh water. That is what is being told. Now, inside this freshwater ocean, if you see Greenland, that is an island. So that is called as Pushkar Dweep. And on Pushkar Dweep, there is one mountain called as Manasottar mountain. So we will come to it afterwards. What is that Manasottar mountain? So we are just going more and more deeper into this. So this is a further zoom view. This is a further zoom view. So if you see these white circles, they represent the ocean of milk and butter, yogurt. And if you see this golden, we have gone further down here. So if you see this golden thing, it is again an ocean. This is ocean of ghee. Then green one is an island. Inside that, it's an ocean of liquor. And again, inside that, it's an ocean of sugarcane juice. Now we have come to the innermost island. Now this blue thing is the ocean of salt water. And if you see the island between that, it is called a Jambu Dweep. So this is Jambu Dweep surrounded by Lavanoda. So ocean of salt water. And yeah, so this is Jambu Dweep. And what is in between? It is Mount Sumeru. So this is the place where there is residence of demigods at the top. Now, if you see at the below of the mountain, there are some lines drawn on Jambu Dweep. So we are now looking at it. So these are different varshas of Jambu Dweep. So this Jambu Dweep is divided into 9 varshas, 3 on the top, 3 on the bottom, and then 3 in the middle. And if you see at the very end, the bottommost part is Bharat Varsha. So this is where we are in the universe, Bharat Varsha. Now, if we remember this, so Bhumandal, it is dividing universe into 2 halves. So now we will be looking into the upper half, what is in the Bhumandal. So this is the upper planetary systems which is there. So if you see, just the below one is the ocean. It's called as Garbhodak Ocean. And the middle thing is Bhumandal, which we have seen just now that there are 7 islands and we are in the middle of that 7 island in Jambu Dweep, and that too in Bharat Varsha in that Jambu Dweep. And in this top, this is the upper planetary system. So if we see what kind of conception we have, like all the planets are in one line. But if we see from here, we see Venus, Mercury, they all are one above another. They are in different planes. And if we remember, Prabhupada said that sun is closer to earth than moon. So if you see in this diagram, sun is closer to Bhumandal than moon, which is farther away, right? So this is how we have Venus, Mercury, Mars, Jupiter, and Saturn. So as per scripture, there are only 5 planets till Saturn. There is no Uranus, Neptune. And then we have Saptarishis and Pole Star, and then further loks, Maharlok, Janalok, Tapalok, and Satyalok. So this is the upper planetary system. Now, if we see the lower planetary system, if you see the Bhumandal, it is little, it has some thickness. So the lower planetary systems are in that thickness. So these are the lower planetary systems. So Atal, Vital, Sutal, Talatal, Mahatal, Rasatal, and Patal. So all these are present in this Bhumandal, the thick layer between the Garbhodak Ocean and the Bhumandal. And so these are the lower planetary systems. And if we go further below, the red circle which is at the down, so they are the hellish planets. So this is where Narka is there. So by this we are able to visualize the universe, like where different planets are and where we are with respect to all those things. So this is like the
whole cross-sectional view. So now we can see the whole universe here with this understanding. So there is this lower Garbhodak ocean, there is upper planetary systems, and then there is Bhumandal in between. And then we can also understand there is this Mount Meru, the golden mountain in between, and then below that there are lower planetary systems. Now, if we see what is on these two sides of Bhumandal, the two mountains, so now we will look into that. So if we remember this first, so we discussed about Alok Varsha, this circle outside of the golden land. So that is called as dark land. Now why it is called as dark land, we will understand here. So if you are able to see on all the four sides, you see this mountain at the edge. So this mountain, this is this two mountains, these are like surrounding the whole Bhumandal. So what they are doing is they are blocking the sunlight. So sun is inside, and outside of these mountains there is no sunlight. That is why this land is called as Alok Varsha, dark land. It blocks all the sunlight. And we can see a planet here. So this is another view where we can understand how the mountains are, and outside of these mountains there is complete darkness because there is no sunlight. Now if we see this planet, this is the Saturn planet, and as per scriptures there are 5 planets and Saturn is there. And if we see in real life also, Saturn is the farthest planet which is visible to our naked eyes, human eyes. So after Saturn we cannot see anything, because if you see there is mountain after that, and after that there is no sunlight. So how things are so relatable, we can understand. Now this is how orbit of planets are. So now before discussing orbits of planet, what is our current understanding? That sun is at center of universe and all the planets are revolving around sun. But this is not the idea of scriptures. As per scriptures, all the planets, including sun, they are revolving around earth. Earth is at center. So how come this orbital shape? So sun is revolving around the earth and all the planets are revolving around the sun. So what is happening? All the planets are revolving simultaneously around the earth and around the sun, because sun is going around earth. So this is the orbits of all the planets. And if we see how beautiful it is, the shape they make. So if we remember this diagram, this photo of universe, if we see below, there is Lord Ananta, who is holding the Bhumandala on his head, right? So this is where Garbhodakshay Vishnu is, right? On Anantashesh, lying down, and from his navel a lotus flower is coming, and there is Lord Brahma. So this is the whole understanding of our universe. So this is our sacred universe from the point of view of scriptures, which is very personal. And one more thing which I want to add is, if we see in this, there is Kim Purusha Varsha. So in all these different Varshas, there are famous devotees of the Lord residing, and they are worshipping their respective Ishtadev. So in Kim Purusha Varsha, Hanumanji is residing and he is worshipping Lord Ram. So in this view of universe, we see that it is very, very personal. In all the planets, there is someone residing. In all the different planets, there are demigods residing. So this is not at all impersonal. But if we go forward, so why should we accept it? When we say scriptures are mythology, like this is what people say and we hear, and right? So if we remember this, that Saturn is the farthest planet visible to naked eyes, right? So we are going to see about the orbits of the planets. So these have been examined very scientifically by Sadabhut Prabhu. He is a disciple of Srila Prabhupada. He is no more on this planet. So he started with the hypothesis that
the author of Bhagavatam had no knowledge of planetary distances and all these features of Bhumandala. So he just made it up. So Sadaput Prabhu, he wrote a C program, like a computer program, and he tried to find out what are the chances of all these things matching up, because now we are able to, in modern science, we are able to find out the distance of planets and all those things. So he wrote a program and then he figured out what is the probability of all these things adding up, and if someone don't have knowledge, so it came out to 0.005%. So it is like close to 0% chance that someone without knowledge of all this features of Bhumandal can just say something like this in Bhagavatam. So with this, he started that author has no knowledge, but with this he proved at the end that author of Bhagavatam had full knowledge. So we see that this is very scientific way he proved it. So what Prabhupada is saying here in a room conversation, that so every knowledge is there in Vedas. There are many Vedas and they have all the knowledges, and then here Prabhupada also says the astronomical science. So the point is everything is there in Vedas, and so we should not fall for this trap. So it was all started by Britishers who wanted to conquer over India, and they understood that we have so much faith and we were so much grounded in our Vedic culture and Vedic scriptures. So unless and until they break this faith, they won't be able to conquer. So this is how people started losing all this faith. And then we have seen how scientifically things have been proven here, that there is complete knowledge, and what Prabhupada is saying here is completely true. So we should not fall for this trap. So now comes the point, where is God? Right. So in current modern age, why people are saying there is no God? So there is a well-defined chronological order, like there is a well-defined events which happened. So if we see before, in all the traditions of the world, there was this idea of universe having this shell, whatever we have discussed, and they were having similar idea that Earth is a center of the universe and sun is revolving around Earth. So this was the idea around the whole world. And where is God? That God is beyond the shell of the universe. Now, what happened during the Renaissance period? Copernicus, he did some change. He changed the position of Earth and sun. So he said sun is at center of universe. So with that, the position of Earth and sun changed. So Earth started revolving around the sun, and still the shell was there. So universe was finite, there was a shell, but he changed the position. Now afterwards, what happened? Just because of this change of position, and people started doing calculation with this theory in mind that sun is at center. So they started finding difficulties in doing calculations. And as a result of that, what happened? They said the stars cannot be so close. They have to be so far away to resolve the differences in calculations. So with that, what they did? They removed the shell of the universe. So this is how gradually these things happened. This is all well defined. We can search for it. And with the removal of the shell, where is God? So God was removed from the picture because shell was removed. So this is how we ended up with a infinite, empty, impersonal universe, because shell is removed. Now there is infinite empty space, and it all became impersonal, that we are the only one existing in this universe on Earth, and there is no one else, and hence there is no God. Right. So this is how we can understand that this is how modern civilization is leading one to godless civilization. So they propose some theory, and based on just that theory, they are doing all these things and leading one to a godless civilization. So this was the second objective of our discussion. So there is God. Just 400 years back, we have seen all the traditions around the world have this understanding, just 400 years back, that
the demigods, they call them angels. They were not having this understanding that they are demigods, but they were understanding that angels used to control the planets. And beyond the shell, because there was a shell to universe, they were also having this understanding that beyond the shell there is kingdom of God. So if someone asked where is God, answer was very simple, that beyond the shell of the universe there is kingdom of God. So if you see on the bottom right corner, there is this one Brahman, right? It has a shell, and beyond the shell, this is Vaikuntha, right? There are so many spiritual planets, and there is Goloka. So answer is very simple. Beyond the shell of the universe, we have kingdom of God. So this was our first objective, that to understand that how understanding of the world around us, it has so much impact on our understanding of ourselves, who we are. Now we can understand that there is God. So then we are part and parcel of God, and there is some relationship between us and God. But because of this modern civilization, they are leading it to godless civilization. So Krishna says in Bhagavad Gita that in 10.8, aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam bhuda bhava samanvita, that I am the source of all spiritual and material worlds, and everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their heart. So we have looked at all this knowledge now. So what is the point of all this knowledge? To understand that Krishna is the source of all this. We have discussed that there is such a universe. It has so many different, it has Bhumandal and the 7 islands, and then upper planetary systems, and then there is this Bharatvarsha and all those things. So from whom all this is coming? This from Krishna. And then what is the point? That we become fixed up in knowledge and we worship Krishna. But later on in same Bhagavad Gita, Krishna says, but what need is there, Arjun, for all this detailed knowledge? This Krishna is saying further in Bhagavad Gita, with a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. So Krishna is saying, what is the need of all this detailed knowledge? Because just one fragment of Krishna is supporting. If you see, this is Mahavishnu, from whom these infinite universes are coming. So Krishna is saying like this here in 10.42. So then what is the further thing? So Krishna says that in 15.15, Vedescha sarvaim aham eva vedyo. By all the Vedas, I am to be known. So this is the conclusion of all the Vedas. So even if we study all these Vedas in detail, what is the purpose of it? That I am to be known. So whatever we have discussed till now, if we see, there are a lot of books written on it. So I will show you. So if you see, there is this Bhugol Tattva, there is this Vedic cosmography, there is this commentaries. If you see, this is so thick book. There is another book on the subject matter, Bhagavad Cosmology. And if you see another book, Bhagavad Puran. So like there is so much detailed knowledge. So what is the point? Even after we study all this, we will get lost. So what is the point? By all the Vedas, I am to be known. So if you remember this, if you see at the below, Bharatvarsha is there, right? So what is the significance of this Bharatvarsha? If we see, we have studied this universe in great detail, like there is universe, and then there are so many upper planetary systems, so many lower planetary systems, and then even in middle planetary system, there are so many different 7 islands, and in the middle island, there are 9 Varshas, and we are in this Bharatvarsha. So what is the significance? So this is given in Bhagavatam in 5.19.21. If we see the highlighted part, we demigods only aspire to achieve human birth in Bharatvarsha to execute devotional service, but these human beings are already engaged there. So if we understand the position of this Bharatvarsha is very, very special. Even demigods are aspiring to take birth there. If we see the remaining 8 Varshas above, they are also considered as
Bhaumani Swarga Padani, they are also considered as heavenly places on earth. So this is very, very special. The birth which we have got and in Bharatvarsha is very, very special. In Bhagavatam, it is said here even demigods are aspiring to take birth here. So that is the unique position we have in the whole universe. So what is the process? If we see, we have this. So now what is the process to execute devotional service? So in this Kali Yuga, Hare Krishna Mahamantra is the process for self-realization, and this has been given to us, right? So the essence of everything is we should chant and take shelter of Hare Krishna Mahamantra. So yeah, I am dedicating this to Sadaput Prabhu, from whose lectures and from his books I have drew inspiration on this subject matter, and I dedicate this to Srila Prabhupada, who gave us the sublime process of chanting Hare Krishna Mantra. So thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, वैसे तो हमें लगा साइंस की क्लास में पहुंच गए हम. सो वंडरफुल. वी हैव ए साइंटिस्ट प्रोफेसर इन आवर संघा. हाउ डिड यू ऑल लाइक इट? ये जो बताया है प्रभु जी ने, ये मुश्किल है. और भागवतम का जो 5वां स्कंद है, उसको समझने में सबके पढ़ने में ही पसीने आ जाते हैं, समझने तो बात की बात है. और इतना अच्छी तरह से प्रभु जी ने समझाया. और ये उस दिन भी जब मैं बृहद भागवत में पढ़ रहा था, वो किम पुरुष लोक का आ रहा था, मैं सोच रहा था चलो देखूंगा कि किम पुरुष लोक कहाँ है हनुमान जी. तो आज सौरभ प्रभु की कृपा से वो भी किम पुरुष लोक का भी पता चल गया. सो वंडरफुल. देखिए कितना हमारे अच्छा बताया इन्होंने, कैसे हमारे स्क्रिप्चर्स जो बोलते हैं वो सही है. और पाश्चात्य सभ्यता को जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, they have knowledge but it is not complete. They don't have complete knowledge. They have partial knowledge and then they have theories. So such wonderful explanation. And मैं तो इनकी बुक्स देख के ही डर गया जो इन्होंने बुक्स दिखाई. So thank you so much Saurabh Prabhu. Maybe Krishna willing, so we'll try to make something else with kids and all, थोड़ा सा इसको करके दिखा के कि they should also understand what is our whole thing. Or we will have maybe 1 or 2 more classes on this एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद. So thank you so much. Anybody wants to say anything to Saurabh Prabhu? One second. Yes, Parmeshwar Mataji, Dhruv Prabhu, who's there? Yes, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Saurabh Prabhu. Actually मेरी काफी टाइम से डिजायर थी कि इस चीज को मैं समझूं. आई एम सॉरी प्रभु, मेरी इंटेलिजेंस जो है बहुत 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 कम है. मैं ऑल्दो इतना समझ नहीं पाई हूँ, बट लेकिन 1-to-1 मैं दोबारा से इस चीज को समझना चाहूंगी. और गिरिराज प्रभु जी ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन के बाद दोबारा सेशन रखेंगे, तो थैंक यू सो मच. मैं उस सेशन में अभी से अपनी बुकिंग कर रही हूँ कि मैं जरूर आऊंगी. थैंक यू माता जी. जो बुकिंग कराएगा माता जी, उसको वो क्या वो मलाई कोफ्ता लेकर आना पड़ेगा, जो पहला बुक कराएगा माता जी. प्रभु जी आज तो रबड़ी और फलूदा बनाए, अगर वो कहोगे तो वो भी ले आऊंगी. आज नहीं, मैं तो आपको उसके लिए कह रहा हूँ माता जी, जब क्लास होगी, क्लास के लिए बात कर रहे हैं माता जी. मैं भी क्लास के लिए कह रही हूँ प्रभु. नई डिशेस इन्वेंट हो रही हैं. आप तो अभी पूरा मलाई कोफ्ता भी अटके रह गए. हाँ, वही अटके रह गए माता जी, पिछड़े ही रह गए, मैं वही अटके हैं माता जी. ठीक है. So thank you so much Saurabh Prabhu. So wonderful to hear all this and develop our faith in our scriptures. Thank you. So Hare Krishna. Thank you so very much. और जो लोग IDC क्लास कर रहे हैं, प्लीज अपना अध्याय पढ़िए. आज परमेश्वर गिरधारी प्रभु will take the next chapters, तो प्लीज उनको पढ़िए, और ताकि hopefully by tomorrow evening we'll try to end it. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. Thank you Prabhu ji.